Welcome to yet another year of Conscious Community Change Program, an initiative to consciously connect the children to the community to create the change. Serving is nothing but traveling into the lives and dreams of people, and it is in their stories that helps us connect the dots in our own lives. Well, I'm talking about the I Am Inspired project, the whole idea of which was to experiment the power of connect by taking our children to meet different inspiring people, go to different inspirational places and have inspirational experiences. As intended and as it always happens, every journey starts with the sound of the inner calling, and the sound of the inner calling became more profound when our children entered inside the doors of Sharnam to play their own heartbeats by drum circle. Circle is when you come together and create music together. People come and sit in a circle and they bring their own instruments sometimes, or they're provided with instruments, and you play your own music, whatever comes naturally from within, and it's done in a group. So there is coordination that happens, there is communication that happens with the other people of the group. They might be strangers, they might be people you know. At any level, for children or for adults, in any situation, a drum circle is really fun, it's helpful, and it has so many different qualities that bring out the best in a person. It really creates a very high energy, and it also helps in people calming down. It can do all of this together. साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल के बारे में बताइए। ओके, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग योर माइंड, एंड माइंड में कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, टेंशन या तो स्ट्रेस हो जाता है मन में, तो उसको कैसे सुलझाने का, मन को कैसा हल्का करने का, वो होता है साइकोलॉजी में। और स्पिरिचुअल में होता है, आप सबको आत्मा पता है, सोल जिसे कहते हैं, तो अपना अंतरात्मा जो होता है, अपने मन को और अंतरात्मा को कैसे ज्वाइन करने का और कैसे समझने का कि वो एक ही है। Children, from the moment that they entered, they looked like happy sunflowers. The 2 hours were very inspiring for us at Sharnam. I think they were really amazing. Yeah, they were brilliant. They have very happy and open energy. They're very receptive, and they're willing to experiment with so many new things. I'm truly amazed at their level of English. Yeah, and of course their presentation skills were amazing. They're so computer literate, and we're very impressed by them. And we're so happy to be associated on this day with you. हम लोग को आज यहाँ पे ड्रम सर्कल बताने के लिए लेके आया गया है। हम जिस दीदी से मिले, उन दीदी का नाम नेहा दीदी और अदिति दीदी है। उन्होंने हमें हार्ट बीट सिखाया है। हार्ट बीट करते टाइम हमें बहुत मज़ा आया। दीदी ने एक साथ में करने को बोला, पर हम लोग आगे पीछे हो रहे थे, तभी भी मज़ा आया। फिर बाद में दीदी हम लोग को सिखा रहे थे, तभी जिसे मिस्टेक हो रहा था तो हम उसे सिखा रहे थे, वो हमें सिखा रहे थे, तब थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। फिर बाद में हम सब सीख गए और साथ में कर रहे थे, तभी मज़ा आया। और ड्रम बजाते बजाते हम लोग को नाचने का मन कर रहा था, डांस करने का मन कर, इसलिए आज हम लोग को बहुत मज़ा आया। A traveler who has opened the doors inwards, connecting to one point of dream in his heart, can easily connect to the same chord in each one's heart. So did this incredible young man who believes that everything we do in life gives us an opportunity to explore and evolve our infinite selves. I am talking about the renowned scriptwriter of Maqbool and Munna Bhai MBBS and the director of a lovely film, Jaane Do Ya Jaane Na, Abbas Tyrewala. I think meeting children who are so frank and
some of the things that they found on the net, I was like, how did they do that much research, you know? And a lot of questions that we stop asking yourself, they ask you again, they make you think again. I'm a director, it's what I do, I make movies. How long has it been since I asked myself, why do I make movies? You know, why am I a director? What are my challenges? So for me, I think the most important part is that their questioning made me answer certain things that I had stopped questioning a long time ago. How did you start directing? How did I start direction? Actually, मैं स्कूल से कर रहा हूँ. मैंने अपने कुछ दोस्तों को जमा किया. 5-10 मिनट में हमने कहानी बनाई. आप लोग भी करते होंगे कभी-कभी के. जल्दी कहानी बना दो. This is your part. This is your part. You will say this. You will say this. और हमने उतनी देर में जाके एक प्ले किया. और वो मुझे इतना एक्साइटिंग लगा, एक जैसे प्ले को डायरेक्ट करना. उसके बाद आई केप्ट डूइंग दैट इन स्कूल. कॉर्पोरेट फिल्म आपको पता है क्या होती है? कॉर्पोरेट ऑडियो विजुअल. अच्छा, जैसा आप लोगों ने ये मेरे लिए बनाया, वैसा बड़ी कंपनीज अपने लोगों के लिए बनाती है और उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है. तो वो स्क्रिप्ट लिखने लगा. हर काम से कहीं 500 रुपया, कहीं 1000 रुपया ऐसे मिलने लगा था और पैसा था. और वहाँ से फिर आई स्टार्टेड राइटिंग. आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन, आई स्टार्टेड डूइंग स्क्रिप्ट राइटिंग. और एक बहुत अच्छा साल था मेरे लिए, क्योंकि वो 1-2 साल के अंदर 3 फिल्में आई जो लोगों को बहुत पसंद आई. एक थी मुन्ना भाई, एक थी मैं हूना और एक थी मकबूल. तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत नाम हो गया भगवान की दया से. और काफ़ी वक्त तक लिखने के बाद मुझे ये लगा कि जो मैं लिखता हूँ, अगर कोई और डायरेक्ट करता है तो कहीं कुछ चला जाता है, कहीं जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे नहीं होता है. और मुझे लगा कि अगर मैं जिस तरह उस कहानी को देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी इट माई वे, देन आई विल हैव टू डायरेक्ट इट माई सेल्फ. सो अल्टीमेटली आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग. आज हम अब्बास टायरवाला सर से मिले. हम लोगों को बहुत मज़ा आया. हम उनसे बहुत इंस्पायर हो गए. पहले उन्होंने बोला कि हमें कभी लाइफ में गिव अप नहीं देना चाहिए. गिव अप देंगे तो हमें हमारे जहाँ हमें पहुँचना है हमें वो नहीं मिलेगा. हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम ही बेस्ट है, तभी हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा. और उन्होंने बोला अगर जो भी चीज़ हम सीखना चाहते हैं ना, तो उसके बारे में सोचो कि हम उससे बेहतर कर सकते, उससे बेहतर कर सकते. जब वो काम पूरा हो गया तो उसको पीछे कर दो, समझेगा इससे भी बेहतर हम और भी काम करेंगे. इस तरीके से उन्होंने हमें समझाया कि हम जो बनना चाहते हैं हमको पूरा विश्वास उस पर लगाने का है, और हम गोड से हमको वो चीज़ मिलेगा और हम जरूर वैसा उस तरीके से बन जाएंगे. Taking lessons from Abbas of how important it is to firstly accept the way we are. This experience of acceptance wouldn't have been possible unless our children entered into this heavenly place called Advitya, a center that works creatively to rehabilitate the lives of special children. The children interacted with each other, shared their life stories, and felt the inspiration in themselves. आज हम लोग अद्वित्य आए हैं. यहाँ पे सब स्पेशल चिल्ड्रन रहते हैं और इन्होंने हमारे साथ सब कुछ शेयर किया और एकदम स्वीटली बात की है इन्होंने. ऐसे हम लोग को लगा नहीं कि इतने अच्छे बात करेंगे और कुछ भी चीज़ करने के लिए शर्माते नहीं हैं. हर सब कुछ चीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम लोग. और उनका जो काम है वो हम लोग को इतना अच्छा लगा. मुझे लग रहा था कि मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊँगी, और वो लोग ने इतना अच्छा काम किया तो मैंने कहाँ भी नहीं देखा ऐसा काम. और ये बच्चों से और अंजलि दीदी से मैं इंस्पायर्ड. पहला मैं क्या करता था, शर्म पर लगता था मेरे को डांस करने में. तो ये लोग को देखा, लोग डांस करने लगे तो मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैं पहले मैं डांस करने लगा. It is always challenging to enter the door of unknown. But once the choice is made, the entire journey becomes known. And it feels like it is known to you since ages.
Advitya is a vocational center for mentally challenged adults. And at Advitya we train those adults who are not being taken by any other institute or who have major behavior disorders. We use music and color as our basic therapy over here. And yeah, there are a lot of extracurricular activities also for them, so that they feel happy and they look forward for coming to Advitya each day, like dancing, singing, yoga, painting on canvas, pottery making. There is at least one outing a month which makes them feel much more happy. Advitya is a place where it's their own place, and for them biggest punishment is not coming to Advitya. These children who have come over here, because just as we entertain people, they have also come to entertain us, and it's fun spending a day with them, because otherwise we hardly get any opportunity to spend a day with any school or any child. I really like these children. They are very innocent, and just as we don't have negative feelings in our hearts for anybody, they also don't have the negative feelings for us in their hearts. Now they're playing with us, they're enjoying with us, so it's really entertaining. One thing we all realized that day, that this world is a very beautiful place, and getting inspired is never one way. It is both. It is giving and it is receiving your being. Traveling becomes very interesting when you have your companion along with you. And what better than books as your companion on the way? Our children had an interesting time with a very well-known and a best-selling author of Stay Hungry and Stay Foolish. Yes, I am talking about Rashmi Bansal. While Rashmi shares her experiences with our children, she also shares keys to her dream and the learnings of her life. Rashmi, you have written 3 books so far, and it is all about the people you have met, or who have inspired you personally, and who you want, to be an inspiration for other people. What are the things that you have learned in the process while writing about these people? Well, I think the most important thing I've learned is that everybody is on a journey of life, and I think any of us can make a dream come true if we have these 3 elements, which are passion, purpose and patience. So to achieve anything, you have to just set your heart and mind on it, and then work towards it and make it happen. आज हम लोग रश्मि बंसल दीदी से मिले। वो एक राइटर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने 3 बुक्स लिखी है और उनकी बुक्स में सब अलग अलग लोगों के बारे में है। एक बुक बिजनेसमैन वालों के बारे में है। उन्होंने यूथ्स को कैसे गाइड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे बुक्स लिखे थे, और हम लोग को भी इंफॉर्मेशन दिए कि क्या पढ़ना चाहिए, जो आपको बनना है वो बनने का, दूसरे लोग का एडवाइस उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट है वही प्रोफेशन बना लो, वैसा बता रहे थे। और जो भी कैसे बुक्स लिख रहे थे वो सब बताए थे। और उन्होंने बुक्स मोस्टली रियल लाइफ में जो होता है वही उनके बुक में लिखते थे। I know of so many people who would want to go and touch the sky, but I also know of some people who want to make their dreams so big that even the stars would want to come and touch them. In our lives, we connect to so many things around us, so many people to give a shape to our dreams. Sometimes, only by questioning and figuring out where and how to move forward, moves our energies from us to the universe and leads us to the higher consciousness. आज हम लोग येलो स्पाइडर्स आए नेहा दीदी के पास। यहाँ हमने पोट्री के बारे में सीखा और दीदी ने हमें मेडिटेशन करवाया। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस
लिंचिंग टेक्निक जो हम अभी करने वाले हैं वो सबसे पहली टेक्निक थी। उसमें एक क्ले का जो लंप है इसको हम मेडिटेटिव कैसे बनाते हैं और इससे हम हील कैसे होते हैं, हम ये सीखेंगे आज, ठीक है। I feel bliss and happiness in my heart. Yellow Spiders is basically a pottery club, and it started as a very small space of teaching pottery. I started with one student, and it started as an extracurricular thing for me. But through the journey, I realized that how much I enjoy teaching, and how it has benefited me, say psychologically. How is that he's healed me as a person, as you know, the changes that I found in myself and everything. I came to a point where I realized that I need to give it back to society, and in some way or the other. So it started with a small thing as a teaching process, and in the journey of like 2.5 years, I think it's gone beyond it. फिर इसके बाद सोनिया दीदी ने मेडिटेशन कराया, फिर हमने वो मेडिटेशन करके फिर सोनिया दीदी ने बोला कि तुम अपने मन में सोचो कि ऐसा जो भी चैलेंजेस है जो तुम करना चाहते हो वो करो, और क्ले अपने हाथ में लेके अपना मेडिटेशन करते हुए तुम सोचो कि तुम जो चाह रहे हो वो हो जाएगा पूरा। जैसे कि मैं चाहती थी कि मेरा एक पार्लर हो खुद का, और मैं मतलब कि मेरा खुद का ही पार्लर, मैं वहाँ की मैडम हूँ और मेरे पार्लर में सब काम करें, ऐसा मैंने ऐसे इमेजिन किया कि मेरा एक बहुत बड़ा पार्लर है और वो पार्लर में ऐसा। तो फिर मैं काम कर रही हूँ और मेरे हाथ में जो क्ले था उसका मैं ऐसे शेप देती जा रही, तो उसका अलग सा शेप बना। मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ कि मैं ऐसा सोच रही हूँ पार्लर वाले। मुझे ऐसा अब इस समय पे ऐसा लगा कि हाँ मेरा पार्लर हो सकता है, हो जाएगा मेरा पार्लर। Our dreams come alive only when we put life into it. Intending truthfully is the first step towards the birth of our dreams. And seeing it, achieving it, and living it is not only the beginning of our dream, but our journey of life ahead. However, to continue the path of this dream, we need to constantly and continuously ask ourselves, how am I evolving as a human being through my dreams? And how much of my dream is contributing to the world? I had a wonderful time sharing this inspirational journey with you. Our children are already on their way, on the roads to their dream. I wish and I really hope that you too find your inspirational and follow your dreams.